Yeah, welcome back, students. Let's move on to today's new sum. Sony, Moni, and Tony were in partnership firms. So these are the three partners sharing profits and loss in the ratio of 2:2:1. So this is their PSR, profit sharing ratio. Okay, so this is their capital account, 1,80,000 and 46,000. ये रहा मेरा creditors, loan on mortgage of machinery and partners loan, Sony's loan दिया है, P&L account दिया हुआ है. Okay, so this is my reserves, this is my profits. So I am going to divide this in PSR to my partners. Okay, so ये add हो जाएगा partners capital में, so that I can calculate my adjusted capital. Okay, see on the asset side, the available cash is 22,000. So I will be using this money for paying off the dues. Okay, assets were realized in piecemeal. Okay, so this is my first realization. Then second, third, and fourth one. Okay, so first realization, what they are saying is June 2022, rupees 10,000 received after meeting in full mortgage loan. Okay, so after paying mortgage loan of 60,000, कितना कैश बचा है आपके पास? 10,000. तो आपका फर्स्ट रियलाइजेशन मनी इज 10,000 और मॉर्गेज लोन आप पे कर चुके हो. उसको पे करने के बाद आपके हाथ में 10,000 रुपया है. तो when you will make your order of payment, that time mortgage loan will not be taken into consideration because the realization money already is after paying the mortgage loan on mortgage of the machine. Okay, so debtors 30, stock 20. So my total second realization will be 50,000. August ka third realization, debtors 40, stock 50. So my total realization is 90. September, debtors 34, stock 40. So my total realization will be 74. Okay. Remaining stock was taken over by Tony, one of the partners, at an agreed value of 6,000. Okay, so this will also be added to my realization money. So मेरा last realization हो जाएगा 80,000. 74 plus 6, 80. The sundry creditors were settled for 8,000 बोला है. Okay, ठीक है. जबकि sundry creditors कितना पे करना चाहिए था? 10, but it is settled at 8. Fine. Partners decided to distribute cash as and when realized, that is piecemeal. You are required to show distribution of cash applying the highest relative capital methods, that is your excess capital method. Okay, so I hope this part is clear. I will just have a brush up of the question once again. There are three partners, Sony, Moni, Tony, and their PSR is 2:2:1. Cash is 22,000, available cash which will be used for paying the dues. And there are creditors of 10,000 जिसको 8,000 पे settle करना है. And there is a loan on mortgage of machine which is already paid at the time of first realization. And after paying that, money in hand is 10,000. Partner's loan has to be paid, and there is P&L account which we are going to divide it in our PSR. Okay, so let's start with step 1, that is statement of showing excess capital. Okay, so PSR is 2:2:1, capital is 1,80,000 and 46, और इस पे हम लोग ये P&L account add करेंगे in their PSR ratio. So I will get my adjusted capital. So how much is my P&L? My P&L is 20,000. So 20,000 I'm going to divide in the ratio of 2:2:1. Okay, so 20,000 divided by 5, 4,000 into 2, 8,000, 8,000, 4,000. Okay, so my adjusted capital is 1,08,000, 88,000 and 50,000 respectively. Then I will be calculating my unit capital. So how do you get the unit capital? Adjusted capital divided by the respective PSR. So adjusted capital, that is step 2, and PSR is step 1. So it is very simple. 1,08,000 divided by 2, 54,000. Next, 88,000 divided by 2, 44,000. Next, 50,000 divided by 1, 50,000. Okay. Then you have to identify which is the base capital. Base capital is what? The lowest of the
unit capital is called as base capital. तो 54, 44 and 50 में से lowest amount क्या है? 44. ठीक है? Now I will calculate proportionate capital. How to do that? Base capital multiplied with their respective PSR. तो 44,000 into 2. Okay? Next वाला भी same. 44,000 into 2. Then 44,000 into 1. Okay? Right? Then excess capital, how we will get? Step 2, adjusted capital minus step 5, proportionate capital. Okay? So 1,08,000 minus 88,000, 20,000. Second capital, second Monica capital becomes 0. Okay? And last one is 50,000 minus 44,000 makes it to 6,000. Okay? Then, as I have been saying in all the lectures, this is a loop. You have to keep repeating it, okay, till the other one of the partners becomes again 0, right? So this is my now new unit capital will be again same thing. What am I going to do? Step 6, excess capital divided by step 1, PSR. ठीक है? तो 20,000 divided by 2, 10,000. ठीक है? और लास्ट वाला 6,000 divided by 1, 6,000. ठीक है? अब unit capital is base capital is what? Lowest of unit capital. तो 10,000 और 6,000 में से छोटा amount कौन सा है? 6,000. Then I will remove my proportionate capital. Again, how will I get proportionate capital? Base capital multiplied with PSR. So 6,000 into 2 is 12,000. Okay? And 6,000 into 1 is 6,000. So this becomes 0. Now I have to stop here. Okay? So Sony is liable to be paid how much? 8,000. Okay? So I hope this steps is clear. Okay? Ensure, double ensure that your step 1 is correct, because based on this, we decide our priority order also. Okay? Now let's come to the priority order. Priority order में सबसे पहले I'm going to pay my creditors. Why? Now you must be thinking कि ये लोन भी तो है. कौन सा लोन? ये 60 वाला मॉर्गेज लोन. बट इधर पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला है कि रियलाइजेशन मनी में is against after meeting the mortgage loan. Okay? That means it will not be considered in the order of payment. वो already pay हो चुका है. ठीक है? या तो आपके पास पे करने के लिए क्या क्या है? आपके पास पे करने के लिए आपके पास क्रेडिटर्स है, आपके पास आपका इंटरनल लोन है पार्टनर का, और फिर आपका कैपिटल अकाउंट है. ठीक है? तो फर्स्ट पे टू क्रेडिटर्स 8,000 rupees, then pay the internal loan, that is the partner's loan, 30,000. Then from step, then from the other step, I'll have to pay what? Capital. So capital में first I will pay 8,000 to Sony. Then I will pay to Sony and Tony. How much will I pay? I will pay 12 plus 6. ये amount 12 plus 6. Okay? Yeah. And last में I will pay all in their PSR 2:2:1. Then coming on to piecemeal distribution of cash, I will make creditors column because I'm going to pay that first. Then I will make Sony's loan account because that I'm going to pay second. And then I'm going to pay my capital. Okay? और जब भी आप capital लेते हो तो यहाँ पे हमेशा adjusted capital वाला figures लेने का. Okay? Right? तो ये जो ऑर्डर आपने लिखा है इसी ऑर्डर में आप आपका स्टेटमेंट भी बनाओगे, आपके कॉलम्स भी इसी ऑर्डर में बनेंगे. पर्टिकुलर्स कैश, क्योंकि कैश ही आप सबको देने वाले हो. फिर क्रेडिटर्स को फर्स्ट पे करोगे तो क्रेडिटर्स कॉलम, फिर सोनीज लोन, एंड देन योर कैपिटल. ओके? So as I said, first we have to pay to creditors. How much? 8,000. Yeah. तो 8,000 मैं पे कर सकती हूँ. हाँ, कर सकती हूँ. मेरे पास अवेलेबल कैश कितना है? 22, राइट? उसमें से 8,000 ये मैं दे सकती हूँ ना. मेरे पास 22,000 है तो मैं पूरा 8,000 पे कर सकती हूँ. अभी मेरे पास कितना कैश बचा है? 22 minus 8, 14. मेरा क्रेडिटर्स हो गया सेटल 8 के अगेंस्ट 8. ठीक है? नेक्स्ट आई विल पे माई पार्टनर्स लोन, सोनीज लोन. सोनी का लोन कितना है? 30. बट मेरे पास पैसा कितना है? 14. तो राइट नाउ मैं सोनी को सिर्फ 14 पे करूंगी. बराबर? तो
30 में से 14 गया 16, तो 16 इज पेंडिंग फॉर सोनी। कोई बात नहीं, आई विल यूज दिस फर्स्ट रियलाइजेशन मनी 10,000। ओके, या सो 16 पे करना है। अभी भी मेरे पास पैसा कम है, तो मैं पहले उसको 10,000 दूंगी। ओके, या बराबर 16 पे करना है, बट है ही नहीं मेरे पास सिर्फ 10 है, तो मैं उसको 10 दूंगी। Yeah. और सेकेंड रियल मनी तब तक ऐड नहीं करना है जब तक आपका पहला पैसा पूरा खत्म नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता। अभी भी मुझे सोनी को कितना देना है, 6,000 देना है। तो लेट्स सी मेरा नेक्स्ट रियलाइजेशन। माय नेक्स्ट रियलाइजेशन इज 50,000, डेटर्स 30 एंड स्टॉक 20। 50, तो 6,000 में 50 में से मैं 6,000 तो दे ही सकती हूँ, पूरा दे सकती हूँ, है ना। हाँ, तो लेट्स पे सोनी का 6,000। ओके, या so now Sony's account is settled. And now after paying Sony, the cash with me is how much? 44. 50 minus 6 is 44. Okay. Next order में क्या बोला है? Pay to Sony. How much? 8,000. तो 8,000 तो मैं पूरा पे कर सकती हूँ, तो सोनी में से मैं 8,000 पूरा पे कर दूंगी। ओके, सो लेट्स सी, ये रहा। सोनी में से मैं पूरा 8,000 पे कर दूंगी। ये देखो, 1,08,000 में से 8,000 मुझे देना है, मैंने दे दिया। ओके, सो 44,000 में से 8,000 गया, 44 minus 8, 36, yeah, and 1,08,000 में से 8 गया, it's 1,00,000. Okay, so this is how you have to be very very careful. Okay, अब किसको देना है? सोनी और टोनी को। कितना देना है? मोनी और टोनी को ना, कितना देना है? मोनी को देना है 12,000 और टोनी को देना है मुझे 6,000। तो टोटल कितना देना है मुझे वो दोनों को? 18,000 देना है क्या मेरे पास पैसा? हाँ है ना, मेरे पास 36,000 है, तो मैं पूरा 18,000 दोनों का पे कर सकती हूँ। ओके, या सो आई हैव पेड इट। सो 1,00,000 में से 12,000 गया, 1,00,000 में से 12,000 गया, 88 बचा। ओके, और 50,000 में से 6,000 गया, या यू कैन कीप इट सेपरेट ऑल्सो, 44,000 बचा। ओके, हो गया। और लास्ट क्या है? पे ऑल, पे टू ऑल, करेक्ट, या पे ऑल इन विच रेशियो? 2:2:1। तो 18,000 बच गया पैसा। 18,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 7,200, 7,200 एंड 3,600। ओके, सो माइनस 88,000, 80,800 and 44,000 minus 3,600, 4,400. Okay, then I'll be using my third realization money, 40 plus 50, 90. Pay all in PSR, 2:2:1. So 90,000 को डिवाइड करो, 36,000, 36,000 and 18,000. Okay, simple. 36,000, yeah, 80,800, 44,800 and 4,400 minus 18,000, 22,400. Then the last realization money ये है, डेटर्स 34, स्टॉक 40 एंड स्टॉक टेकन बाय टोनी 6,000। तो टोटल मेरे पास रियलाइजेशन मनी कितना हुआ? 80। वही सेम, पे टू ऑल 2:2:1 के रेशियो में। तो 80,000 को डिवाइड करो, 32, 32 एंड 16। ओके, minus 44,800, 12,800, 12,800 and 6,400। ठीक है, दिस इज लॉस ऑन रियलाइजेशन। हम चेक कर सकते हैं हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग। मैंने आपको बताया था कैसे चेक करते हैं। यू हैव टू चेक, तुम्हारा पीएसआर वापस आना चाहिए। ओके, पीएसआर वापस मिला मतलब आंसर राइट है। जीरो सब कट हो गए, 64 1 जा, 64 2 जा,
6420. So I'm getting my ratio of PSR back. That means my answer is correct. At every stage आपको आपका PSR मिलता है. देखो मैं यहाँ भी दिखा सकती हूँ, यहाँ भी आपको PSR मिलेगा आपका. देखो ध्यान से 22, this is 44,800, this is 44,800. Every step जो आप करते हो ना आफ्टर पेइंग रियलाइजेशन, जो कि बैलेंसेस बचते हैं इक्वल टू, वो सारे के सारे PSR ही आपको आंसर देगा. देखो 224 ones are, 224 twos are, 224 twos. I told you, na, every step you will get your PSR. See, like this. So this is how you cross-check your answer. Okay? So rather than checking at the end, at every stage, you should check. आपको आपका PSR मिल रहा है ना, मतलब आपने right किया है. Okay? So I hope these concepts are clear with everyone. Okay? Basic concept clarity is done from my end. And I hope it's clear to everyone. I will just give you a preview of the sum. So this is the complete question. You can have a rough look over it. Okay. The last statement that you prepare. The first statement you have to be careful with excess capital method. Then the order of payment. If these two are right, then obviously the third step will be definitely right. Unless and until you make any calculation error. Okay. So just giving you a brief look once again of the sum. This was step 1. Okay. This was step 1. Then this was step 2, order of payment. Yeah. You can make this statement अलग और this statement अलग. इसके नीचे भी बना सकते हो, या जैसे कि मैंने पहले लेक्चर्स में बोला है, आप इसको ऐसे साथ में भी बना सकते हो. ठीक है. फाइनल आंसर में there is no change. Okay. Then have a quick look. This was your first step. Paying creditors first, 8,000. Then paying Sony's loan, 30,000. Then paying Sony 8,000. Then paying Sony and Tony 12,000 and 6,000 respectively. And then balance बच गया है तो pay all the partners. Okay. Till then, happy learning. Well, till I will, be coming up with the next video. Okay. Happy learning to everyone.